Hello students, in this lecture we are going to start the remaining sums of exercise 7.1. In the previous lecture we had already seen the question number 6, right? Question number 7 we had already seen before in the previous lectures. Question number 10 was homework for you, I think so, right? Okay, now it means two questions are remaining, that is question number 8 and question number 9. So in this lecture we will complete this question number 8 and then afterwards this question number 9, and afterwards you will get some extra sums based on this exercise 7.1. okay, so might be this video be small, ये जो video है वो थोड़ा small होगा, but you will get the extra sums, okay, in homework. So it means work for you will be equal only. Okay, so let us start with the 8th question, that is find the value of y for which the distance between the points p 2, -3 and q 10, y is 10 units. क्वेश्चन क्या है, y की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो फाइंड करनी है, बट द कंडीशन इज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज 10. ये जो दो पॉइंट्स हमें दिए हैं P एंड Q, उसका डिस्टेंस क्या है, 10 है. ओके, so let us start with our solution of this question. Okay, so distance between these two points P and Q is given by the formula, you know only, right? First minus first, but as here only it is PQ, we have to write under root, right? Okay, x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Understood? But here this distance is given. Read this. Distance between the points P and Q is 10. It means this distance is given to us, so therefore I am writing 10 is equals to, let us put down the values, x1 minus x2, first minus first, it means 2 minus 10 whole square plus y1 minus y2 minus 3 minus y1 is minus 3, minus is the sign of formula, y2 itself is 1, हमारा y2 क्या है, y है, right? Okay, so y all square. Now to remove this square root sign, अब हमें ये square root की साइन निकालनी है, तो इस साइड क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा. ओके, सो 10 square. So this now square root sign is removed. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 minus 10 whole square plus minus 3 minus y whole square minus 3 minus y whole square. Okay. Now here y1 minus y2. Okay. So first term square formula आएगी, right? That we will apply afterwards. Let us write as it is only. a minus b whole square, जो आइडेंटिटी 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ी वो आएगी, राइट? ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस. क्या किया यहाँ पे, ये जो स्क्वायर रूट निकालना था, तो if the square root is removed from right hand side, then if the square root is removed from right hand side, then the square will come on left hand side, and inside square root whatever is given that will come as it is. Okay, so 10 square is 100. 2 minus 10. 2 minus 10 answer is minus 8 whole square. 2 minus 10 minus 8 whole square. Okay, now here we will apply the identity. First term square. Minus 3 square is 9. Minus. यहाँ पे बीच में माइनस की साइन है तो ऑब्वियसली माइनस आएंगे. 2 multiply by first term multiply by second term, it means 2 multiply by minus 3 multiply by 1.
a square minus 2ab compulsory plus b square. What is your b? Y. So here we will write y square. Understood? Okay. 100 as it is, minus 8 square. Minus 8 multiplied by minus 8. Minus minus plus. And 8 8s are 64. Plus 9. Minus minus plus. 3 2s are 6 into y. 6y. Plus y square. Okay. Now this 64 and 9 are numbers. So they will be added. 64 plus 9 क्या होगा? 73. Okay. Now this 100 will come to this side. Then it will become minus. So यहाँ पे क्या रह जाएगा? कुछ नहीं. So 0 आएगा. So 73 plus 6y plus y square minus. Now this 100 will come right side and it will become minus. So minus 100. Now let us arrange this equation. Right? Then what will happen? 0. Okay, these are numbers. So 73 minus 100 का आंसर हमें लिखना है. But before that, highest power first, y square. Then afterwards 6y. 73 minus 100. Plus minus subtraction. 100 minus 73 का आंसर क्या आएगा? 27. Bigger term sign. Bigger is 100 and its sign is minus. यहाँ पे क्या आ जाएगा? Minus. Right? So for us, we got one quadratic equation. That is y square plus 6y minus 27 is equals to 0. Right? We got this quadratic equation. Now we are going to solve this quadratic equation. We know only how to solve, right? Okay. Multiply the coefficient of first and last term. So 127s are 27. Make two parts of 27 in such a way that subtraction is 6. Okay, 27 के दो ऐसे parts जिसका subtraction है वो क्या आता है? 6. Which are the two parts? 9 3s are, yes, correct. 9 3s are 27. 9 minus 3 you will get answer 6. Okay, so therefore y square, फिर बाद में क्या आएगा? 9 3s are 27 is equals to 0. Now let us put the sign. After y square which sign is there? Plus. Before 27 minus. And यहाँ पे between क्या आएगा? Plus minus minus. Understood? Now from this only you have to take common. So take common from this first two terms. So y common. So bracket में क्या आएगा? Y plus 9. Okay. Now copy down here this y plus 9. And you know only compare it with third term. 9th standard में हमने किया है, right? थर्ड टर्म के साथ कंपेयर करो. क्या नहीं है? y है, -3 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3 is equals to 0. Okay? y plus 9, y plus 9. So first bracket y plus 9 and second bracket y minus 3 is equals to 0. Now multiplication of two bracket is equals to 0. It means first bracket equals to 0, then second bracket equals to 0. Okay? Whenever you get multiplication of two bracket is equals to 0, कहीं पर भी आपको ऐसा दिखे multiplication of two bracket is equals to 0, then compulsory always हर एक बार यही आएगा. फर्स्ट ब्रैकेट में जो कुछ भी दिया है that is equals to 0, सेकंड ब्रैकेट में जो कुछ भी दिया है that is equals to 0. Okay, so y plus 9. If plus 9 goes to that side, it will become minus 9, and minus 3 if it goes to that side, it will become plus 3. So we got our final answer. What we needed? We needed the value of y. क्वेश्चन में क्या दिया है? Find the value of y. y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. There are two such values of y.
y की ऐसी दो पॉसिबल वैल्यू है, राइट। दोनों वैल्यू आप y की जगह पे पुट करोगे, राइट। अगर आप लिखोगे 10, -9 और इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करोगे तब भी आंसर 10 आएगा। एंड इफ यू आर राइटिंग 2, -3 एंड यहाँ पे आप लिखोगे 10, y की जगह पे आप 3 पुट कर दो, एंड देन आफ्टरवर्ड्स इफ यू स्टार्ट टू फाइंड द distance between these 2 points, then also answer will be 10 only. Okay, understood? If you are not able to understood, rewind the video and see one more time. यहाँ पे जो है वो एक स्टेप इंपॉर्टेंट किया था, राइट। क्या था? स्क्वायर रूट। इफ यू आर रिमूविंग स्क्वायर रूट फ्रॉम राइट हैंड साइड, देन द स्क्वायर विल कम ऑन लेफ्ट हैंड साइड। द रिमेनिंग टर्म्स इनसाइड द स्क्वायर रूट विल बी एज इट इज ओनली। यहाँ पे हमने a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 3 का आप स्क्वायर करोगे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 9 ही आएगा, माइनस 2 into a into b, so 2 into a, your a was -3 and b is only y, b जो है वो सिर्फ y है, राइट। ये माइनस की साइन का फॉर्मूला किया, ओके। सो 2 into a into b कंपल्सरी प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, योर सेकंड टर्म इज अगेन वन मोर टाइम y ही है आपका सेकंड टर्म माइनस y नहीं है, ओके। दिस साइन इज फॉर फॉर्मूला, ये जो साइन है ये आपकी फॉर्मूला की साइन है, a माइनस b, राइट, a माइनस b होल स्क्वायर। तो ये साइन जो है वो किसकी है? फॉर्मूला की। y इट मींस योर b सेकंड टर्म, ओके, अंडरस्टूड? So write this sum in your book by pausing the video, and then afterwards we will start our 9th sum. Okay, completed. Now let us start our solution of 9th. Meanwhile we also read the question. Question भी हम पढ़ लेते हैं और बोर्ड भी रब करते थे। क्या लिखा? If q 0, 1 is equidistant from p 5, -3 and r x, 6, it means जो q वाला पॉइंट जो है 0, 1 वो इक्विडिस्टेंट है। कौन से दो पॉइंट से? p and r से, ओके। then first question is find the value of x. so first of all we have to find the value of x, okay. after finding the value of x, it is also given that find the distances QR and PR. वो जो x की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे पुट कर दो तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, राइट। तो वो जो है आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, ओके। सो समझ में आया सम? अगेन वन मोर टाइम, क्या है? जो Q वाला पॉइंट है 0, 1, इट इज अ लिटिल बिट बिग वन बिकॉज यहाँ पे भी x की दो वैल्यू आएगी शायद। लेट अस चेक दैट। Q वाला जो पॉइंट है Q 0, 1 that is equidistant from P and R. So for your simplicity and understanding purpose, let us draw a one simple figure which is not necessary for you, right? ये आप अपनी बुक में नहीं करोगे तो चलेगा, ओके। ये Q वाला पॉइंट है, what is that? 0, 1, ओके। वो क्या है? ये P and R, ऐसे कहीं पे भी दो पॉइंट्स है P and R, उससे क्या इक्विडिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम है। The coordinates of P are 5, -3 and R के coordinates x, 6. Okay, so let us start the solution of 9th one. Here Q के कोऑर्डिनेट्स हम नहीं लिख रहे, राइट, ओके। हियर Q इज equidistant from P and R. It means Q is equidistant from P and R. It means the distance between this P to Q and the distance between this R to Q is same. So it means PQ is equals to RQ. Like this sum we had done previously, okay.
Now as these distances are same, their squares will be also equal. So PQ square is equals to RQ square. Okay, now let us apply here the distance formula. यहाँ पे हम distance formula apply करेंगे. PQ square, first minus first. P का first 5, so therefore 5 minus Q. Q का first 0, 5 minus 0 whole square plus minus 3 minus 1, right? यहाँ पे इसका first क्या आएगा minus 3. PQ square, Q का second minus second, sorry. P का second क्या है minus 3 minus Q का second क्या है 1 whole square is equals to RQ square. R का first x minus Q का first 0, x minus 0 whole square plus 6 minus 1 whole square, right? Second minus second. Okay, so 5 minus 0, 5 minus 0 का आंसर क्या आएगा 5 only, and 5 square is 25. Understood? Okay, now plus minus 3 minus 1, minus addition of numbers, 3 plus 1 4, bigger term sign minus 4, but if you do the square of minus 4 then it will be plus only, so here I am writing 16 plus only. Okay, now x minus 0, x minus 0 it means simply x, right? And the square of it means x square. Very simple, है ना? Okay, now 6 minus 1, 5, and 5 square is 25. Now, before only we had seen that if there are same terms on both sides with same sign, then they will be cancelled, right? So यहाँ पे भी 25 plus है और यहाँ पे भी 25 plus है, then it will be cancelled. अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता, then take this 25 to right hand side, then it will become minus 25, then 25 minus 25 will cancel. Okay, so it means the value of x square is 16. X square की value 16. Okay, now how to solve this? For this there is a we have to form one quadratic equation. What will be the quadratic equation? X square plus 16 will come to minus this left hand side and it will become minus. So minus 16 is equals to 0, right? X square minus 16 is equals to 0. Now which is this formula? A square minus B square. Here I am writing the formula, right? A square minus B square. Then what will be the answer of this formula? 1 time plus, 1 time minus. याद आया? ये फॉर्मूला हमने 9th स्टैंडर्ड में सेकंड चैप्टर जो था पॉलिनोमियल्स उसमें आइडेंटिटी आई थी. ओके, सो a square minus b square, so we have to convert it into square. Okay, so let us convert. Here I am writing inside bracket x square, यहाँ पे 16 का हो जाएगा 4 square. 16 किसका स्क्वायर? 4 square, right? is equals to 0. So a square minus b square, it means 1 time plus 1 time minus. So therefore 1 time x plus 4, second time x minus 4, and what will be the final answer? So यहाँ पे right side में क्या रहेगा? 0 ही रहेगा. Again we got here multiplication of two bracket is equals to 0. इसके पहले के जो 8 सम में भी हमने देखा था कि multiplication of two bracket is equals to 0. Then तो क्या आएगा? तो फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0, इट मींस x plus 4 is equals to 0, and second bracket is equals to 0, it means x minus 4 is equals to 0, right? Now plus 4 will come to this side, then it will become minus 4. तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा x equals to minus 4, and this minus 4 will come to right hand side, then it will become plus 4. So we got our two answers of x. That is, one is minus 4 and one is 4. Now, we don't know that which is the exact value of x. So, we have to consider both the values of x. हमें x की कोई जो है वो परफेक्ट वैल्यू जो है वो नहीं मालूम. उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये पॉइंट आप इस तरह राइट साइड कर दो, या तो ये r वाला पॉइंट के लेफ्ट साइड आ जाए,
तब भी जो है वो डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम. सपोज हैंड फिगर विल बी लाइक दिस. अंडरस्टूड. यहाँ पे r आ जाएगा, यहाँ पे p आ जाएगा, ऊपर तो q ही रहेगा. तो हमारा तो डिस्टेंस सेम होना चाहिए, राइट. ऐसा तो हमें कहीं नहीं बताया कि r जो है वो राइट साइड ही होना चाहिए, p जो है वो लेफ्ट साइड ही होना चाहिए. दैट्स व्हाई द टू वैल्यूज ऑफ x आर कमिंग. समझ में आया. अगर आप x की वैल्यू मान लो कि प्लस रखते हो तो वो राइट साइड आएगी, माइनस रखते हो तो सपोज वो लेफ्ट साइड आएगी. लेफ्ट साइड आ जाएगी तो फिगर ऐसी होगी. फिगर ऐसी होगी इट मींस ये डिस्टेंस सेम है. कंडीशन क्या है, इफ q इज इक्विडिस्टेंस. q जो है वो इक्विडिस्टेंस है. ऐसा नहीं बोला है कि p लेफ्ट साइड है, p राइट साइड है कंपल्सरी, ऐसा कुछ नहीं बोला. ओके. So either this figure will be there or either this figure will be there. But our condition should be satisfied. What was our condition? That q is equidistant from p and r. Okay. For that, here we are getting two values of x. Right? So it means, so therefore, r will be either minus 4,6 or r will be 4,6. समझ में आया है. ओके. r जो है वो दो तरह के हो गए. If it is on suppose on left hand side then it will be minus, and if it suppose on right hand side then it will be plus. वो भी हमने सिर्फ ये एग्जांपल लेकर जो है वो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं, राइट. ऐसा हो सकता है. ओरिजिनली हमें तो मालूम ही है -4,6 जो पॉइंट है वो किस साइड आएगा, लेफ्ट साइड ही आएगा, राइट. और ये पॉइंट जो है वो राइट साइड आएगा. इसी तरह से होगी फिगर. अंडरस्टूड. ओके. नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये तो हमने कर दिया. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस qr एंड pr. अब जो है वो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है qr एंड p. देन कंफ्यूजन अराइज. कंफ्यूजन क्या होगा कि r की वैल्यू ये ले कि ये ले, दोनों लेनी है. ओके. यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ r both 1 by 1. Let us we will solve that sum only. qr and pr वाला जो sum है वो हम solve करेंगे. But before that you have to write this much, right. जो कुछ भी यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में लिखा है वो आपको लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट दिस. यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर डालो. फिर बाद में हम ये qr and pr फाइंड करेंगे. ओके. सो पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस सम फास्ट. ओके. कंप्लीटेड. सो नाउ वी विल start to find the value of this distance qr and pr, which is very simple. But आपको ये कंफ्यूजन होगा कि भाई कौन सी ये भाई दो वैल्यू ली है r की, तो कैसे करना है. वो जो कंफ्यूजन है वो हम रिमूव कर देते हैं, राइट, बाय डूइंग द सम ऑन द बोर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस qr. सो वी आर गोइंग टू find qr square. qr square means q का first minus r का first. Okay, what is the value of first of qr? q 0 and r is -4. So 0 minus is the sign of formula and minus 4. Understood? 0 minus bracket में -4 square plus second minus second 1 minus 6. Understood? 1 minus 6. So 1 minus 6 whole square. Let us solve this. Q. यहाँ पे क्या आएगा? QR square का आंसर क्या आएगा? 0 minus minus plus 4. So 0 plus 4 whole square plus 1 minus 6. 1 minus 6 it means minus 5 whole square. 0 plus 4. That is 4 only. 4 square is a 16 plus minus 5 square. That will be plus 25. 16 plus 25. That is 41. That is the answer of QR square. But we need to find QR. So QR will be root 41 because 41 is a prime number and its square root is not possible. Understood?
फर्स्ट आंसर आया ये क्यू आर का. Now we are going to find QR only, but by taking R as 4,6. Okay. So again second time. Same ही आएगा आंसर, but then also we have to do. Root 41 ही आएगा आंसर, but then also we have to do. Okay. First minus first. Now we have to consider this. 0 minus 4. 0 minus 4 का आंसर क्या आएगा? Minus 4. There is no importance of 0. Second minus second. 1 minus 6. Okay. So 1 minus 6 all square. 0 minus 4. It means minus 4. 1 minus 6. Simple. Minus 5 all square. Minus 4 square. It means plus 16. Minus 5 square. It means plus 25. If you add, you will get 41. So therefore, QR. We need to find only QR, not QR square. So QR, it means root 41. Understood? Same answer आया. In the same way, like this only, you have to find this PI. But here, the distance for PR will be different. दोनों जो PR के आंसर आएंगे वो क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे. That you have to do in homework. Okay. Again one more time I am telling. Now you have to find this PR. तो PR आपको कैसे फाइंड करना है? ये P की वैल्यू, ये दो कोऑर्डिनेट लेने हैं और पहले ये R के दो कोऑर्डिनेट लेने. फिर बाद में P के ये दो कोऑर्डिनेट्स. And now you have to consider R as 4,6. Okay. And at that time, when you are finding the value of Pi, if you are finding by considering this, then some answer will get. Okay. And afterwards, when you are finding Pi by considering this, then the answer will be different. Okay. That you have to do in your book while doing this sum. Understood? So here we had given PR as a homework, and you can see only the video is comparatively small than the other videos, right? So today you will get the sum based on this exercise 7.1, and in the next lecture we will start our new topic of this chapter number 7 only, that is section formula, and based on that formula, right, we will do the sums of examples and exercise 7.2. Hope so you had understood today's lecture. Thank you.